Hello, everyone. Today we are going to discuss few important interview questions and answers on clustering technique. And these questions will be very important if you are going to appear for an interview related to some research post, that is R&D post, or some faculty post, where machine learning is a part, or where if you have the research domain is clustering or unsupervised learning techniques. So let's start the class. First question is, what is clustering and how is it different from classification? We all know that clustering is an unsupervised learning technique that groups data points into clusters based on similarity or distance without prior labels. While, on the other hand, classification is a supervised learning method where the goal is to assign predefined labels to data based on training. तो क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जिसमें आपका डेटा के ऊपर कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है, सिमिलरिटी और डिस्टेंस के बेस पे हम ग्रुपिंग करते हैं डेटा को। वाइल क्लासिफिकेशन में हमें प्री डिफाइंड जो लेवल है उसको असाइन करना पड़ता है, राइट, बेस्ड ऑन आपका ट्रेनिंग। हम ये लर्न करा के ये लेवल्स डेटा में असाइन करते हैं, राइट, फॉर द न्यू डेटा। एंड फॉर द ओल्ड डेटा और ट्रेनिंग डेटा we make our model learn about the data. Example is clustering groups patients by tumor features without knowing the diagnosis, right? Clustering groups the patients by tumor features without knowing the diagnosis, while classification predicts the diagnosis using label data. ठीक है, तो क्लस्टरिंग से क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं बाय ट्यूमर फीचर्स, ट्यूमर का जो फीचर्स है, विदाउट नोइंग द डायग्नोसिस। व्हाइल क्लासिफिकेशन से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोसिस प्रेडिक्ट कर सकते हैं with the help of label data. Then what are the major types of clustering techniques? Major clustering techniques include partitioning methods like, k-means, k-meroids, hierarchical methods, where we have agglomerative and divisive, density-based method like, DV-scan, optics, model-based method like ZMM, that is Gaussian mixture models, grid-based methods like Sting, Click, and fuzzy clustering like fuzzy Siemens. Now it has specific strengths like, for DB-scan, it handles noise very well, while Gaussian mixer model captures elliptical clusters. So these are the different types. Then how does k-means clustering work and what are its limitations? K-means aims to partition the data into k clusters by minimizing the intra-cluster variance. तो क्लास के अंदर जो वेरिएंस होगा उसको कम करना, मतलब इंट्रा क्लस्टर वेरिएंस मिनिमाइजेशन. And the steps are initialize k centroids, assign points to the nearest centroid, update centroid based on cluster means, and repeat until convergence. So पहले हमने k centroids को ले लिया, पिक कर लिया, ठीक है, इसको इनिशियलाइज करना बोलते हैं. उसके बाद पॉइंट्स को नियरेस्ट सेंट्रॉइड में असाइन किया, जिसके लिए हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है. और वही डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए आप different distance metric like Euclidean distance metric, city block distance metric, cosine, ये सब यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. देन जैसे ही ग्रुप हो गया उसके बाद फिर से आप मीन निकालोगे हर एक ग्रुप का, हर एक क्लस्टर का, और अकॉर्डिंगली आप सेंट्रॉइड जो है, करंट सेंट्रॉइड, आप करंट मीन के साथ असाइन कर दोगे, मतलब करंट मीन बन जाएगा आपका सेंट्रॉइड. और फिर से आप पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालोगे हर एक सेंट्रॉइड से, और जो नजदीक होगा, जो पास में होगा, नियरेस्ट सेंट्रॉइड होगा, उसमें अब वो पॉइंट्स असाइन करोगे. तो इससे हर एक बार आपका क्या होगा, चेंज होता जाएगा सेंट्रॉइड. बट एक समय के बाद जैसे ही कॉन्वर्जेंस आ गया है, मतलब जैसे आपका सेंट्रॉइड मूव नहीं करने लगेगा, तो वो ही अल्टीमेट स्टेप होगा, अल्टीमेट सेंट्रॉइड पोजीशन होगा.
ठीक है, देन वी विल स्टॉप। सो इसलिए हमने स्टेप 4 लिखा है, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। इसका लिमिटेशंस क्या है? इट रिक्वायर्स प्री डिफाइनिंग के, दैट इज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, सेंसिटिव टू इनिशियल सेंट्रोइड्स एंड आउटलायर्स। इनिशियली सेंट्रोइड जो आप लिए हो उसके ऊपर ये एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल whom you are selecting as initial centroid, and also outliers। outliers के कारण रिजल्ट आपका डिफरेंट आ सकता है, डिफरेंट मिल सकता है, गलत हो सकता है, तो आउटलायर्स को हमें विजुअलाइज करना होगा पहले। assume spherical clusters of similar size and not suitable for non-globular shapes. Next question is very important. What is the Silhouette score in clustering evaluation? ये सिलहौटे स्कोर क्या है, क्लस्टरिंग में हम क्यों यूज करते हैं? द सिलहौटे स्कोर मेजर्स हाउ सिमिलर ए पॉइंट इज टू इट्स ओन क्लस्टर कंपेयर टू द अदर क्लस्टर। ये सिलहौटे स्कोर ये मेजर कर रहे हैं कि हाउ सिमिलर ए पॉइंट इज टू इट्स ओन क्लस्टर कंपेयर टू अदर क्लस्टर, मतलब अपने क्लस्टर में कितना वो फिट हो रहा है, राइट? तो इसका फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू बी आई माइनस ए आई डिवाइडेड बाई मैक्स ऑफ ए आई एंड बी आई। ये ए आई इज द एवरेज डिस्टेंस within the cluster, average distance within the cluster, and bi sorry, is the minimum average distance to other cluster। तो ai अपने क्लस्टर्स के अंदर एवरेज डिस्टेंस है और bi मिनिमम एवरेज डिस्टेंस टू अदर क्लस्टर्स। नाउ स्कोर रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। क्लोज टू 1 मीन्स वेल क्लस्टर्ड, ठीक है, जो पॉइंट जिस क्लस्टर में होना चाहिए उसी में है। एंड क्लोज टू 0 मीन्स ओवरलैपिंग क्लस्टर, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट? देख सकते हो आप ये आप जो हम ए ले रहे हैं इंट्रा मतलब इन आपका क्लास और क्लस्टर के सॉरी क्लस्टर के अंदर ही जो डिस्टेंस है वो, और जो बी ले रहे हैं हम मिनिमम डिस्टेंस ले रहे हैं क्लस्टर के डिफरेंट क्लस्टर से डिस्टेंस को, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फॉर्मूला इज बी आई माइनस ए आई डिवाइडेड बाई मीन मैक्सिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई, एंड ए आई इज द एवरेज डिस्टेंस विद इन क्लस्टर एंड बी आई इज द मिनिमम डिस्टेंस टू minimum average distance to other clusters। Explain DB-scan and how it differs from K-means. DB-scan stands for density-based spatial clustering of applications with noise. This clusters data based on density. And the key concepts are, epsilon. Epsilon is the radius for neighborhood, and mean points, that is the minimum points to form a dense regions, ये याद रखना है आप लोगों को। and clusters are formed by density connectivity। इस डायग्राम में आप साफ देख सकते हो, mean points we have taken 3, right? These are the mean points। then noise points are those like outliers, core points inside, and border points are near that epsilon value, last epsilon value. Epsilon is this particular radius, right? Radius for neighborhood. Differences from K-means. Here in DB-scan, we don't need to define K, and K means number of clusters beforehand, right? It can find arbitrarily shaped clusters, identifies the outliers। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो आउटलायर्स को कितना अच्छे से ये डिटेक्ट कर पा रहा है। तो ये जो डीबी स्कैन है हम स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं वो डाटा सेट में जिसमें आपका नॉइजेस ज्यादा हो, राइट? उसके लिए ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। and it is sensitive to this epsilon, this radius of this neighborhood, right? And minimum points parameters, यहाँ पे हमने 3 मिनिमम पॉइंट्स लिया है, तो मिनिमम पॉइंट्स एंड एप्सिलॉन के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। हाउ डज हायरार्किकल क्लस्टरिंग वर्क? There are two main approaches for hierarchical clustering। One is agglomerative। एग्लोमरेटिव का मतलब होता है bottom up। Start with each point as a cluster and iteratively merge the closest clusters।
And next one is DBG, that is top down. So start with all data in one cluster and recursively split. यहाँ पे आप देख सकते हो ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। ये जो बॉटम अप है, बॉटम से हम आप सारे पॉइंट्स को लेके क्लस्टर मान के चल रहे हैं, अलग अलग क्लस्टर, और जैसे ही ऊपर जा रहे हैं सिमिलर क्लस्टर्स को मार्च करके आगे बढ़ रहे हैं, ये एग्लोमरेटिव है। डिविजिव में पूरे डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर मान के चल रहे हैं और उसको हम डिवाइड करके जा रहे हैं एज पर देयर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। Now, distance between clusters can be computed using single linkage, complete linkage, average linkage, and watch method. That is minimizing the variance, minimizes the variance. And dendrograms are often used to visualize the cluster hierarchy. डेंड्रोग्राम हम यूज करते हैं क्लस्टर हायरार्की को विजुअलाइज करने के। तो आपको समझ में आ गया हायरार्किकल क्लस्टरिंग में agglomerative, bottom up, and divisive. Divisive means top down. Then what is fuzzy C-means clustering? How is it different from K-means? Fuzzy C-means FCM. It allows each data point to belong to multiple clusters with varying degree of membership. ठीक है मेंबरशिप वैल्यू, मेंबरशिप डिग्री के ऊपर डिपेंड करके ये एक पॉइंट अलग अलग क्लास में बिलोंग कर सकते हैं। जिसमें सपोज ज्यादा प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है उसमें उसका मेंबरशिप वैल्यू ज्यादा होगा, जिसमें कम तो उसके शेयरिंग कम होगा, राइट। Now it minimizes a fuzzy objective function considering the degree of belongingness. More realistic in applications like medical imaging where boundaries may be fuzzy. अब इसका डिफरेंस के मीन्स के साथ यह है कि के मीन्स इज हार्ड असाइनमेंट, या तो एक क्लस्टर में बिलोंग करेगा दैट इज वन, और नहीं बिलोंग करेगा जीरो। वाइल एफसीएम इज सॉफ्ट असाइनमेंट, ये वैल्यूज जो है सिर्फ 0 1 नहीं, 0 1 के बीच वाले वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ बिलोंगिंगनेस। नाउ व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस इन क्लस्टरिंग हाई डायमेंशनल डाटा? सो जब डायमेंशन बढ़ जाता है तो क्या चैलेंजेस हमें फेस करना होगा हम क्लस्टरिंग करेंगे तो चैलेंजेस इंक्लूड लाइक कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी। कार्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब होता है डिस्टेंस मेजर्स लूज मीनिंग व्हेन फीचर्स इंक्रीजेस और व्हेन डायमेंशन इंक्रीजेस। डिस्टेंस मेजर्स का जो आप मान सकते हो वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम होते जाते हैं जैसे ही आपका डायमेंशन और फीचर्स बढ़ते हैं, राइट। Sparse data, that is increasing noise, overfitting, many irrelevant dimensions can skew the clustering. Then visualization difficulties are there. Solution क्या है? Of course, dimensionality reduction. इसके लिए हम यूज कर सकते हैं PCA, TASNE, UMAP. Okay. Then future selection or extraction. जो काम की फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट ओनली यू विल सिलेक्ट और एक्सट्रैक्ट। देन यूजिंग सब स्पेस क्लस्टरिंग, बड़ा जो स्पेस, बड़ा स्पेस को सब स्पेस में डिवाइड करके हम क्लस्टरिंग करेंगे। नाउ हाउ कैन क्लस्टरिंग बी यूज्ड इन रिसर्च एप्लीकेशंस? You know, clustering is widely used in research like bioinformatics, medical imaging, NLP, remote sensing, smart agriculture. In bioinformatics, we have gene expression analysis. In medical imaging, like tumor segmentation, MRI, CT. Then NLP, document or topic clustering, remote sensing, land cover classification, स्मार्ट एग्रीकल्चर, लीफ डिजीज सेगमेंटेशन। ये आपका रिसर्च एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे रिसर्चेस अभी भी चल रहा है, राइट। हाउ डू यू डिसाइड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स? some methods or some techniques are like they are like elbow method. Look for the elbow in the plot of inertia versus k. Then Chilhouette score, we need to choose k that maximizes average Chilhouette score. हमने देखा ना 1 के पास जो वैल्यू रहेगा वो ज्यादा अच्छा होता है, तो वो k वैल्यू लेंगे जिसके कारण Chilhouette स्कोर अच्छा और मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है।
वन के नजदीक वैल्यू जो आ रहा है. देन गैप स्टैटिस्टिक्स compares within cluster dispersion with reference to null data. Then information criteria like AIC, BIC for model based clustering. Then what is the role of clustering in image segmentation? In image segmentation, clustering group pixels based on similarity in color, intensity, or texture. K-means like segments based on pixel features. Mean shift clusters pixels in feature space. Fuzzy C means handles fuzzy boundaries very well. Hybrid models like combining clustering with thresholding or morphology. Important in MRI segmentation, tumor detection, object recognition, where we use clustering for segmentation tasks. Next question, how does mean shift clustering work? You know, mean shift is a non-parametric clustering technique. मतलब हमें ये k का वैल्यू नहीं देना पड़ता, कोई भी पैरामीटर का वैल्यू पहले देना नहीं पड़ता है k जैसा पैरामीटर्स, राइट. इट iteratively shifts a kernel window to the mean of data within it. It points that converge to the same mode from a cluster. Advantages are like no need to specify k, good for complex cluster shapes. Limitation is that computationally very expensive, bandwidth selection is crucial. Then can you explain a real research case where clustering was useful? ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन पूछ लिया जिसमें देखा गया कि आपका जो बैकग्राउंड है रिसर्च का वो एक क्लस्टरिंग है. Now you need to you can cite your own example. Here's just for an example I am citing here. Like in MRI brain tumor segmentation, clustering techniques like FCM, K-means are used to segment the tumors from the normal tissues and to improve diagnosis by enhancing the boundary detection and to serve as a pre-processing step for classification. राइट, सेगमेंटेशन को क्लासिफिकेशन का प्री प्रोसेसिंग स्टेप के को तरफ हम स्टेप के जैसे हम यूज कर सकते हैं. Now, a hybrid model combining clustering with fuzzy logic and morphological operations has shown better accuracy in noisy images. Then next question is, how do you handle outliers in clustering? So many techniques like dbScan that detects outliers as noise, अभी discuss किया था हमने. Robust clustering algorithm like k-medoid, less sensitive to outliers than k-means. Pre-processing, remove or reduce outliers using statistical methods like, Z-score are there, IQR is there. This is Z-score, like you can see here, Z values are there, right? Z values are there. And max Z values are significantly showing the outliers, right? And this is again minimum one, this is the outliers. Similarly, for this IQR, that is interquartile range, you can see Q1 and QT value are there, Q2, this is the median, but Q1 minus 1.5 into IQR, we consider if the values are less than this value, Q1 minus 1.5 into IQR, then we can consider it as an outlier. Also, if it is greater than, some point value is greater than QT plus 1.5 IQR, then that can also be considered as outliers. Okay. So using density based or model based methods for better handling of anomalies. Now, how can clustering results be validated in the absence of ground truth? कैसे validate करोगे आप? For that, sorry, we can use some internal validation measures. Silhouette scores use कर सकते हैं, right? Davis, Holding index, Dunn index, right? Kalinsky, Harabach index, ये सारे इंडेक्स आप यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स और वैलिडेशन मैट्रिक्स यूज कर सकते हो. दिस असेस cohesion and separation without needing labels. What is the mathematical formulation of the k-means objective functions? क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या है? k means aim to minimize the within cluster of sum of square, within cluster sum of squares, WCSS. और वो कैसे मिलेगा हमें? x minus mu I square. I goes from 1 to k, k cluster point के लिए, k cluster center के लिए, and x belongs to ci. Within cluster sum of squares को हम minimize करते हैं. So k number of cluster ci points in cluster I and mu I center of cluster I. What are the strengths and weakness of hierarchical clustering in research applications? Strengths are like
does not require the number of clusters, produces a dendrogram hierarchical view, good for taxonomy, bioinformatics and ontology design. ये हमारा strength है hierarchical clustering का. Weakness है like computationally expensive, big O and square is complexity, sensitive to noise and outliers, and merging and splitting is irreversible. ठीक है, ये आपका weakness है. What are the core concepts of density in DB-scan? Core point is greater than equal to minimum points within epsilon neighborhood. Border point are fewer than minimum points but within epsilon of a core. Noise point neither core nor border. Clustering is based on density reachability and density connectivity. Then how does ZMM, Gaussian mixture model, differ from K-means? You know, ZMM is a probabilistic model. It assumes data comes from a mixture of Gaussians, uses the expectation maximization algorithm. ठीक है, expectation maximization algorithm use करते हैं ZMM, and soft assignment, probability based assignment, and captures elliptical clusters. ये ZMM है, but K-means hard assignment है, right? It only captures spherical cluster, not elliptical, and it is faster but less flexible. Next question है, what is the adjusted rand index, ARI? ARI क्या है? It measures similarity between two clustering results adjusting for same chance grouping. इसका values है ARI is equal to RI minus expected RI divided by max RI minus expected RI. और ये वैल्यू -1 to 1 हो सकता है. 1 मतलब परफेक्ट मैच, 0 मतलब रैंडम, एंड लेस देन 0 मींस वर्स देन रैंडम. याद रखना, ARI is equal to RI minus expected RI divided by max RI minus expected RI. Then what is Davis-Baldwin index? Davis-Baldwin index क्या है आपका? It measures the average similarity between each cluster and its most similar one. इसका फॉर्मूला है आपका dB is equal to 1 by k, I goes from 1 to k, summation I goes from 1 to k, max of I not equal to j, okay, ci plus sigma j divided by this distance of ci, comma cj. So lower TPI means better clustering, ये याद रखना बस. Then sigma is the average intra-cluster distance, and d is the distance between centroid. फिर से और एक इंडेक्स है आपका define Dunn index and its interpretation. Dunn index का फॉर्मूला है Dunn index is equal to minimum inter-cluster distance divided by maximum intra-cluster distance. So minimum inter-cluster होना चाहिए, right? और maximum intra-cluster होना चाहिए. So ये जितना ही आपका क्या होगा, हाई वैल्यू होगा, ठीक है, मिनिमम जितना भी मिल रहा है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम. तो इसका हाई Dunn इंडेक्स का मतलब गुड क्लस्टरिंग, वेल सेपरेटेड एंड कॉम्पैक्ट. Explain the gap statistics for finding optimal k. ये gap statistic क्या है जो हम optimal k वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं? So ये है, it compares the total intra-cluster variation from the different k with expected variation under null references. So gap statistics compares the total intra-cluster variation from different k with expected variation under the null reference. Right? Gap k is equal to en logarithm of wk minus logarithm of wk. So ये आपने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो के क्या होगा, हमें वो के लेना चाहिए जिससे ये गैप का वैल्यू मैक्सिमम हो, मोर रोबस्ट देन एल्बो मेथड. याद रखना एक्सिस एटलीस्ट ये गैप स्टैटिस्टिक को हम ऑप्टिमल के वैल्यू निकालने के लिए यूज करते हैं. Then how can clustering be applied in NLP, natural language processing? These are purposes like topic modeling, document clustering, word embedding grouping, like word to vector मतलब, ठीक है, globe, sentiment clustering, and clustering helps discover latent semantic structure without label data. What is spectral clustering and when should it be used? See, spectral clustering uses the Laplacian of similarity graph to partition the data. Okay. It works well for non-convex clusters, and it uses eigenvectors of graph Laplacian, and it is good for image segmentation and community detection.
Then what are subspace and projected clustering method? Subspace clustering means find clusters in different subsets of dimension. Sorry, projected clustering, it focuses on clusters embedded in subset of features, and it is useful in high dimensional data like genomics or text mining. Next question, explain co-clustering. So simultaneously clusters rows and columns of a matrix useful in text mining, document term matrices और gene expression data. मतलब high dimensional वाले चीजों के लिए हम co-clustering use कर सकते हैं. It reveals local patterns. Then what are सब clustering technique? जो अभी मैंने बता ही दिया था, FCM हो गया, GMM हो गया, probabilistic latent semantic analysis, that is PLSA. They all actually assign degrees of memberships to clusters, so suitable for ambiguous boundaries like tumor segmentation. ये सब सब clustering technique है. What is the role of initialization or in K-means? Initialization affects the convergence and quality. Poor initialization का मतलब होगा local minima, problem है. तो सोल्यूशन क्या यूज कर सकते हैं? के मीन्स प्लस प्लस यूज कर सकते हैं. मल्टीपल रिसर्च करके आप सिलहोटी वैल्यू देख सकते हो, जिसके लिए सिलहोटी वैल्यू, जिसके लिए मतलब जिस रोग के वैल्यू के लिए आपका सिलहोटी वैल्यू ज्यादा हो रहा है वो ले लो, और हायरार्किकल सीडिंग भी आप कर सकते हो. हाउ डू यू हैंडल इम्बैलेंस डेटा इन क्लस्टरिंग, राइट? तो इम्बैलेंस डेटा कैसे आप क्लस्टरिंग में handle करोगे? So for that, use and density-based or model-based clustering, apply feature scaling or outlier removal, pre-processing to merge or split clusters, custom distance functions for better separations. ठीक है, ये याद रख लेना. Then when is clustering not appropriate? कब clustering appropriate नहीं होता है? When natural grouping do not exist, when labels are available. Obviously label रहेगा तो हम क्या prefer करेंगे? Supervised learning, when the feature space does not meaningfully separate the data. Then how to visualize clustering results in high dimensional data? So for that, you can use TSNA, UMAP, PCA, right? Use 2D plots to visually verify cluster quality. Then what is clustering tendency? It assesses whether data has meaningful clusters. Now we have some value like Hopkins statistics. Closer to 0.5 means random and closer to 1 means good clustering tendency. So clustering tendency ये दिखाते हैं कि आपका डेटा का मीनिंगफुल क्लस्टर्स फाइंड आउट होगा या नहीं. 0.5 के वैल्यू के आसपास होगा तो रैंडम, 1 के पास होगा तो गुड क्लस्टरिंग टेंडेंसी. व्हाट आर एन्सेम्बल क्लस्टरिंग मेथड्स? एन्सेम्बल पहले भी मैंने बताया हूं, जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं, राइट? यहाँ भी आपका क्या होगा? इट कंबाइंस मल्टीपल क्लस्टरिंग आउटपुट्स टू इंप्रूव robustness, like consensus clustering, voting based method reduces variance and improves stability. Then what are some real life data sets where clustering is useful? रियल लाइफ डेटा सेट क्या क्या हो सकता है जहां पे हम क्लस्टरिंग यूज कर सकते हैं? लाइक MNIST फॉर डिजिट क्लस्टरिंग, COIL20 object recognition, PubMed abstract for topic clustering, Brecht MRI dataset for tumor segmentation, census data like socio-economic segmentation. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें आपका रिसर्च हो रहा है, जिसको हम रिसर्च डिफरेंट रिसर्च के लिए यूज करते हैं. आप इसको नोट डाउन कर लें. What are hybrid clustering methods? Hybrid clustering means it combines different approaches for better results. Like K-means को PCA के साथ combine किया तो क्या होगा? ज्यादा डायमेंशन वाले के साथ हम काम कर सकते हैं. मीन शिफ्ट प्लस morphology in image segmentation, fuzzy plus watershed for tumor detection. So it improves accuracy and boundary precision and noise handling. Next, can clustering be used in time series data? Yes, with modification. Use dynamic time wrapping, that is DTW as distance. Apply clustering on extracted features. Application क्या हो सकता है? Like ECG clustering, activity recognition, ये सब के लिए.
38. How can clustering be applied in smart agriculture? Like, segment crop fields using satellite imagery. ये बहुत ही important area है, right? हम भी इसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं. Then cluster diseased versus healthy leaves. Group similar soil properties. Predict yield patterns based on weather clusters. Then what is the difference between hard and soft clustering? अभी अभी मैंने बताया था. Like membership, one hard के लिए one cluster, what soft के लिए multiple cluster probability. Example K means हो सकता है hard के लिए, soft के लिए GMM, FCM. Use cases like clear boundaries के लिए use करेंगे, और fuzzy और uncertain data like medical images के लिए soft use करेंगे, soft clustering. Then what is the impact of scaling features in clustering? So most clustering algorithms like K-means are distance-based. So feature scaling, like standard scalar, min-max scalar, is very essential here. Unscaled data can bias clustering toward high magnitude features. आप लोगों को एक क्लास मेरा अटेंड कर लेना, मैं ये बता रहा हूँ कि उसमें मैंने आपका डिफरेंट स्केलिंग मेथड्स के ऊपर डिस्कस किया था, राइट? उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम मिन में स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं. Then what is cluster purity? Purity measures how well clusters contains only a single class. Purity is equal to 1 by n k max of ck intersection tj. Yes, ck is the cluster k, tj is the true class A. Then what is the significance of the elbow method in clustering? Plots inertia, WCSS, okay, within cluster versus number of clusters. The elbow point indicates a balance between cluster count and compactness. तो ये समझ में आ गया. तो ये आपका के वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, ऑप्टिमल के वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बहुत काम में आता है. क्या मेथड? एल्बो मेथड, राइट? Indicates a balance between cluster count and compactness. Then what is inertia in K-means? Inertia क्या है? So sum of squared distances of samples to their nearest cluster center, a measure of compactness. ठीक है, inertia का मतलब होता है sum of squared distances of samples to their nearest cluster center, a measure of compactness. Lower is better. जितना lower होगा उतना better होता है. क्या? Inertia, right? What are the typical convergence criteria for clustering? एक दो तो मैंने बता ही दिया था, like centroid sense below a threshold, no sense in cluster assignments or maximum iterations risk. जितना आपने फिक्स करके रखा था कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी रिस्क हो गया है. Then can clustering handle categorical data? Yes, categorical data को handle कर सकते हैं, like K modes, K prototypes, mixed data, hierarchical methods with matching based distance, राइट, गवार डिस्टेंस, ये सब से आप कैटेगोरिकल डेटा को भी हैंडल कर सकते हो. हाउ डज PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हेल्प इन क्लस्टरिंग? PCA reduces dimensionality by projecting data onto the axis principal components of maximum variance. This helps clustering, like it improves cluster separation by removing noise. It reduces overfitting in high dimensional spaces. It speeds up the clustering algorithms like K-means, which are sensitivity to dimensionality. It helps to visualize clusters in 2D or 3D. Use case like applying PCA before K-means on gene expression data to uncover cancer types. ये use case है, recent research इसमें हो रहा है आपका, ठीक है. How do you decide the number of components in PCA before clustering? Common strategies हैं like explain variance ratio, choose enough components to retain 90 to 95% variance. Tree plot, okay, look for the elbow, and then cumulative variance plot. After PCA, clustering on the reduced space leads to faster and often more accurate results with K-means or ZMM. Now, next question is, why is K-means sensitive to the scale of data? Because K-means uses Euclidean distance as default, right? Unscaled species can dominate the
Clustering outcome, as for example, age 0 to 100 versus salary 1000. तो एज 0 to 100 के बीच में ही होगा और सैलरी थाउजेंड्स भी हो सकता है, ये ज्यादा वैल्यू होगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगा. तो विदाउट स्केलिंग क्लस्टर्स में रिफ्लेक्ट ओनली सैलरी. बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? यूज स्टैंडर्ड स्केलर और मिन मैक्स स्केलर बिफोर अप्लाइंग के मीन्स. Next question, what are the limitation of K-means in real world research scenarios? तो limitation क्या है? It assumes only spherical or equality size clusters. ठीक है, इसमें मतलब ये जो क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं ये सिर्फ इक्वल साइज क्लस्टर मान के चलते हैं, स्पेरिकल मान के चलते हैं. ठीक है, और ये वेरी सेंसिटिव है किसके लिए? इनिशियलाइजेशन, मतलब आप के वैल्यू कैसे ले रहे हो उसके ऊपर ही इसका रिजल्ट डिपेंड करते हैं. राइट. इट मे कन्वर्ज टू लोकल मिनिमा. आउटलायर्स एंड नॉइज में नॉइज होगा तो बहुत सेंसिटिव होता है और रिजल्ट आपका इनकरेक्ट भी आ सकते हैं. So requires number of clusters in advance, not suitable for non-convexive clusters of varying densities. तो इसका सोल्यूशन ये है, आप लोग के मीन्स प्लस प्लस यूज करो, सिलहोते एनालिसिस करो और कंबाइन विथ पीसीए और टीएसएनई फॉर बेटर आउटकम्स. नाउ ऐसा अभी हमने हमने देखा कि जो रिसेंट इंटरव्यू हो रहा है एआईएमएल में, ठीक है, उसमें ये पीसीए और क्लस्टरिंग के ऊपर बहुत पूछा गया है क्वेश्चंस, लाइक हाउ डू डिजाइन ए क्लस्टरिंग पाइपलाइन फॉर हाई डायमेंशनल बायोमेडिकल डेटा यूजिंग पीसीए एंड केमिक्स. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आप कैसे बोलोगे? एक मैं सैंपल आंसर यहाँ पे दिया हूँ, लाइक नॉर्मलाइज द डेटा सेट. पाइपलाइनिंग बोल रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यूज करोगे. एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका होगा नॉर्मलाइज द डेटा सेट, then apply PCA to reduce dimensionality, retain 95% variance, then use elbow or सिलहौते method to find the optimal K. मतलब K का वैल्यू पहले से ही ऑप्टिमल कौन सा हो सकता है फाइंड आउट कर लो. वो K वैल्यू के साथ फोर्थ स्टेप में परफॉर्म K मींस क्लस्टरिंग, देन इवैल्यूएट यूजिंग सिलहौते स्कोर और Davis Walden index, then visualize using TSNA और PCA plot. ठीक है, तो इसको आप एक और एग्जांपल दे सकते हो कि लाइक हाउ दिस अप्रोच एज इन आइडेंटिफाइंग सब ग्रुप्स इन पेशेंट डेटासेट्स लाइक पर्सनलाइज मेडिसिन हब. पेशेंट्स, मतलब इस टाइप का पेशेंट्स के लिए कैसा पर्सनलाइज मेडिसिन होगा, कैसा मेडिसिन सजेस्ट करना सही रहेगा. तो ऐसा एक रिसर्च प्रॉब्लम का एग्जांपल आप दे सकते हो. तो माय फ्रेंड्स, we have discussed 50 very important question answers on clustering techniques, right? Unsupervised learning. And these questions are uh, actually designed by looking at the current interviews on different AI, ML posts or data scientist posts, right? So I hope that if you go through this question, this will help you. If you have any doubt, then please ask me through comment. Okay, that's all for today. Thank you.